मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट डे हम लोगों ने क्या किया था? प्राइस इफेक्ट एंड प्राइस कंजम्पशन कर्व। ठीक है, ये था डायग्राम। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया लास्ट डे। आज हम लोग जो करेंगे वो होगा इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम इफेक्ट, अगेन वी हैव टू ड्रॉ a figure where this side we will measure good y and this side we will measure good x. Now, suppose initially when my income is 100, given the price of the commodity px and py, suppose px is 10 and py is 20. If income is 100, based on this information, let us draw the initial budget line as suppose BL budget line. Now, with this budget line, suppose whatever we are consuming of x and y, based on that, this is our satisfaction and this is the indifference curve, that is IC. So this is our equilibrium point E1. Now, if my income increases from 100 to 200 and price of x and price of y are still the same, that is 10 and 20. Now if income becomes 100, पहले हम लोग जितना x और y खरीदते थे, अभी हम लोग ऑब्वियसली ज़्यादा खरीदेंगे पहले से, और अगर ज़्यादा खरीदेंगे देन माय बजट लाइन विल शिफ्ट राइटवर्ड। देखो यहाँ पे सिर्फ x और y का नहीं बोला, पूरा इनकम चेंज हो गया। तो पूरा इनकम अगर चेंज हो जाता है तो उससे x भी मैं ज़्यादा ले सकती हूँ, y भी मैं ज़्यादा ले सकती हूँ। तो y, if income increases from 100 to 200, price of both the commodities remaining constant, then I will purchase more of both the commodities, and as a result my budget line will shift. It will not rotate but it will shift from BL to suppose B1 L1. Why it has shifted? पहले सिर्फ एक चेंज हुआ था, एक जगह कांस्टेंट था प्राइस इफेक्ट में, दिस वाज कांस्टेंट and this side it has rotated because only price of x has changed, other things has remained the same. Here income has changed, तो अगर income बढ़ता है तो मैं x भी ज़्यादा ले सकती हूँ, मैं y भी ज़्यादा ले सकती हूँ. In that sense, your budget line will shift rightward from BL to B1 L1. And now if we purchase more of both the commodities, obviously my satisfaction will be more, and if my satisfaction increases, then again my indifference curve will also shift from IC to suppose IC1. ठीक है, तो पहले इस ये जब इक्विलिब्रियम था तो मैं इतना y और इतना x लेती थी। अभी जब मेरा बजट बढ़ गया, मैं पहले जितना x और y लेती थी अभी मैं दोनों को ही ज़्यादा ले पाऊंगी। सो व्हेन दिस बिकम्स माय इक्विलिब्रियम न्यू वन, then my y will also increase and my x will also increase. It will become x1 and this will become y1. See, when my income has increased, more of both the commodities are purchased. ठीक है, now again suppose again my income has increased from 200 to 300 and again price of x and price of y are still the same. And now if my income increases from 200 to 300, then my budget line will again shift rightward. Now it is suppose B2 L2. Now if I purchase more of both the commodities as a result of increase in my income, then again my indifference curve will shift rightward. So suppose the new shift is like this, IC2. So this is the equilibrium point T3 where I have purchased more of y and more of x, x2, y2. So like this it will go on shifting with the increase in income. Price of both the commodities will remain same. So shifting from this point to this and shifting from this to this, that is shifting from this to this and this to this. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो shift हुआ और यहाँ से यहाँ तक क्यों change हुआ? Because income has changed and this is nothing but income effect. So shifting from this point to this, basically shifting from this to this and this to this is known as इनकम इफेक्ट. ठीक है, तो इनकम चेंज होने की वजह से जो तुम्हारा
एक्सिस में चेंजेस आ रहा है, एक्स भी बढ़ रहा है वाई भी बढ़ रहा है, तो दोनों चीज़ जो हो रहा है, तुम्हारा बजट चेंज हो रहा है, इंडिफरेंस कर्व चेंज हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम जो शिफ्ट हो रहा है उस वजह से तुम्हारा एक्स भी बढ़ेगा वाई भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो चेंज है, दैट चेंज इज नोन एज इनकम इफेक्ट, ठीक है। नाउ ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है E1, E2 and E3, by joining all this equilibrium point we will again arrive at a curve, and that curve is known as income consumption curve. See, earlier it was price consumption curve. Why price? Because price of the commodity, price of one of the commodity has changed, and that is why the name is price consumption curve. Why here it is income consumption curve? Because income has changed. This is the only reason. तो ऐसा जब होगा ना, ICC, PCC, ये सब जो हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है इक्विलिब्रियम को ज्वाइन कर करके, ठीक है। और जिस वजह से चेंज होगा, नाम उसी का होगा। पहले जैसे प्राइस में चेंज हुआ था इसीलिए PCC, अभी इनकम में चेंज हो रहा है इसीलिए इनकम कंजम्पशन कर्व। तो मैं वापस से बोल रही हूँ, इफ दिस इज योर बजट लाइन एंड दिस इज योर इंडिफरेंस कर्व, द इक्विलिब्रियम पॉइंट इज दिस वेयर वी विल कंज्यूम दिस मच अमाउंट ऑफ एक्स एंड दिस मच अमाउंट ऑफ वाई। Now, if your income increases, price of both the commodities remains constant. तो इनकम बढ़ने से ऑब्वियसली पहले जितना मैं एक्स और वाई ले पाती थी अभी मैं ज़्यादा लूँगी, और मैं दोनों अगर ज़्यादा लूँ तो मेरा बजट लाइन अकॉर्डिंगली शिफ्ट होगा, और बजट लाइन शिफ्ट होगा, मैं पहले से ज़्यादा लूँगी, तो ऑब्वियसली माई सेटिस्फेक्शन विल बी मोर, एंड एज अ रिजल्ट माई इंडिफरेंस कर्व विल ऑल्सो shift rightward. Again we will get another equilibrium point. Again if the same thing continues, then again my budget line will shift and indifference curve will also shift. Again the tendency point will arrive, which will give us the equilibrium. So shifting from this to this and this to this, similarly shifting from this to this and this to this, these are nothing but income effect. Why income effect? Because income has changed but price has remained the same. By joining all these equilibrium points we will get a curve, and that curve is known as income consumption curve. This one, substitution effect, समझना अच्छे से इसको। देखो, substitution effect में क्या होता है, this side again good y and this side again good x. कर्व किस तरीके से मैं ड्रॉ करती हूँ ध्यान रखना, ये इस तरीके से थोड़ा स्टिप होगा, ठीक है। तो दिस इज योर इनिशियल इंडिफरेंस कर्व। देखो मैंने इंडिफरेंस कर्व किस तरीके से ड्रॉ किया है, आई सी इंडिफरेंस कर्व, एंड दिस इज सपोज माई बजट लाइन BL, ठीक है। So this is the equilibrium point. Why this is the equilibrium point? Because the budget line and indifference curve is tangent at this particular point. So suppose this is point E1. Make it B1 L1 IC1. So B1 L1 is the budget line, IC1 is the indifference curve. The point of tangency will give us the equilibrium, where equilibrium point is E1, where the consumer will consume this much amount of good Y and this much amount of good X, ठीक है। Now suppose ये जब मैंने ड्रॉ किया, assumption किया था price of X and price of Y and income is constant. Now देखो चेंजेस क्या आता है, ये सब पहले कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट रहने के बाद मैंने ये ड्रॉ किया। अभी क्या हुआ है चेंजेस, प्राइस ऑफ एक्स हैज डिक्रीज्ड, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम प्राइस ऑफ वाई हैज इंक्रीज्ड. दिस इज द assumption, सेकेंड assumption, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस equilibrium point in the market, it has been observed that price of X commodity has decreased, and at the same time price of Y has increased. So if price of X decreases, then demand for X will increase, and if price of Y increases, then demand for Y will decrease. Now, in order to remain in the same indifference curve, in order to attain the same level of satisfaction, देखो मैंने क्या बोला कि सपोज ये इंडिफरेंस कर्व है, तो अगर ये इंडिफरेंस कर्व है तो मुझे सेटिस्फेक्शन जो मिल रहा है हर एक पॉइंट इस कर्व में मुझे सेम सेटिस्फेक्शन देगा, ठीक है। तो अगर ऐसा हो और प्राइस ऑफ एक्स फॉल कर जाए
और एक ही साथ में प्राइस ऑफ वाई बढ़ जाए, तब क्या होगा? इफ प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीजेस देन डिमांड फॉर एक्स विल इंक्रीज, एंड इफ प्राइस ऑफ वाई इंक्रीजेस देन डिमांड फॉर वाई विल डिक्रीज. इफ दिस हैपन्स देन व्हाट विल हैपन इज, अगर ये होता है तो क्या होगा देखो, इस तरीके से हम लोग अपना कंजम्पशन पैटर्न को चेंज करेंगे कि एक्स इतना ज़्यादा बढ़ाएंगे और वाई को इतना कम करेंगे, सो दैट वी अगेन रिमेन एट द सेम इंडिफरेंस कर्व व्हेन वी गेट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. पहले जितना सेटिस्फेक्शन मुझे मिलता था, ये चेंज होने के बाद अगर मुझे वही सेटिस्फेक्शन चाहिए तो मैं क्या करूँगी? डिमांड फॉर एक्स में इंक्रीज कर दूंगी, एंड एट द सेम टाइम डिमांड फॉर वाई I will decrease in order to get the same level of satisfaction. So now only my budget line will change, but the indifference curve will remain the same. See how? Like this. See, initially my budget line is this, now my budget line is this. So suppose this is B2 L2. मैंने ऐसे क्यों चेंज किया? देखो कैसे ये अभी हम लोगों का इक्विलिब्रियम हो गया, क्योंकि ये जो नया बजट लाइन है, दिस इज टेंजेंट to the indifference curve at this particular point. So this is my equilibrium point. Here I am consuming X commodity more, and here I have reduced my consumption of Y. ठीक है, तो मैं इस तरीके से y को रिड्यूस करूंगी और इस तरीके से x को इंक्रीज करूंगी, सो दैट आई रिमेन इन द सेम इंडिफरेंस कर्व. ठीक है, so that I remain in the same indifference curve, I will change my preferences in such a way that I get the same level of satisfaction. तो मैं ये क्यों कर पा रही हूँ? क्योंकि दोनों का प्राइस चेंज हो गया, एक का इंक्रीज हुआ तो दूसरे का डिक्रीज हुआ. तो जो इंक्रीज होगा उसका डिमांड कम जाएगा, और जो डिक्रीज होगा उसका डिमांड बढ़ जाएगा, और इस तरीके से तुम इसको चेंज करोगे, सो दैट योर सेटिस्फैक्शन remains the same as the earlier situation. So now earlier the equilibrium point was this, now the equilibrium point is this. So shifting from this point to this is nothing but substitution effect. ठीक है, इस पॉइंट से जो इस पॉइंट पे x शिफ्ट किया, ये शिफ्ट को हम लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं. और ऐसे जो ये जो कर्व था ना ICC PCC, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है, सो दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. अभी देखो ये प्राइस इलास्टिसिटी एंड प्राइस कंजम्पशन कर्व लास्ट डे हो गया था. इनकम कंजम्पशन कर्व दैट इज दिस, ये आज हो गया. प्राइस चेंज एंड इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये मैं जब ऑनलाइन क्लास लूँगी तब समझाऊंगी एकदम आप लोगों के सामने. और लास्ट यहाँ पे एक टॉपिक छूट गया जो एंजल कर्व है, वो क्या होता है वो मैं अभी बता रही हूँ. एंजल कर्व शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एंजल कर्व शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड. ठीक है, नाउ नॉर्मली क्या होता है कि इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ता है. सो इफ माई इनकम इज दिस देन माई डिमांड विल बी दिस. ठीक है, इफ माई इनकम इंक्रीजेस देन अगेन माई डिमांड विल इंक्रीज, if again my income increases then again my demand will increase. So by joining all this point we will get a curve, and this curve is nothing but the angel curve. ठीक है, सो इनकम के साथ डिमांड का क्या रिलेशन होता है? इनकम बढ़ने से डिमांड भी बढ़ता है. तो इफ माई इनकम इज दिस then my demand is this. If my income increases my demand will increase. If again my income increases then again my demand will increase. So what is angel curve? Angel curve shows the functional relationship between income and demand. So normally the relation between income and demand is positive, and that is why angel curve is upward sloping. But डिमांड और इनकम का एक और रिलेशन होता है, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इनकम बढ़ने के साथ डिमांड कम होता है. कब होता है ये चीज़? व्हेन इट इज़ द केस ऑफ when it is the case of inferior goods. In case of inferior goods, if income increases then demand for that particular commodity will decrease, and in that situation angel curve will be a downward sloping line. Clear? Why? Because if my income is this then my demand will be this.
And if my income increases, then demand for that particular commodity will decrease. And since there exists negative relationship between income and demand for inferior goods, that is why angel curve for inferior goods is negative. So again I am saying that if my income increases, then demand for normal goods will increase. And if this happens, then angel curve for normal goods is positively sloped, and it is the upward sloping line. Okay, if with the increase in income we know that demand for inferior goods decreases, and in that situation angel curve for inferior goods is negatively sloped, that is it is downward sloping. ठीक है.